students, welcome to grammar lessons. So today I am going to start verbs. So now what is verb? Verbs are the words or group of words that show the action, possession or state of being of the subject of the sentence. So verb is what? You can just say action words. So the example you just see, we eat to live. Here I have taken an example to show action of the subject. Here action. We eat to live. Action क्या हो रहा है? Eat, खाने का. We have two hands to work with. Again have is verb and I have taken possession, shows some possession of the subject. Then these mangoes are not sweet. Are is subject, shows some state of being of the subject. So verbs are the words or group of words that shows the action, possession or state of being of the subject of the sentence. Now, kinds of verbs. There can be various bases to categorize verbs. Verbs को categorize किया जा सकता है in various bases. Basis of role played, second basis of object, then basis of strength, forms and basis of changeability. Now, basis of role played is what? On the basis of the role that a verb play in a sentence. Verb जो एक role play करता है sentence में. There are two categories of verbs. Means basis of role के अनुसार two categories. What are they? Main or verbs or action verbs, and the second is helping verbs, or you can also say auxiliaries. Now, basis of object. A verb can be studied in terms of its object, whether it has an object or it does not have any. Means you just try to remember कि sentence में कभी कभी object होता है, कभी कभी object नहीं होता है, तो उसके अनुसार भी two categories है. अगर object है then it is transitive verbs, अगर इस sentence में object नहीं है तो intransitive verbs. Now, basis of strength. Strong verbs, you also know it by regular verbs, weak verbs or regular verbs. Now, basis of changeability. Means changeability का मतलब क्या हुआ? Means according to the subject, the verb will be, if the subject will be singular, then the verb will also singular. If the subject will be plural, then the verb will also plural. And according to the tense also. So, on the basis of changeability, finite verbs and non-finite verbs. So, in this video, I am going to just teach you in detail transitive verbs and intransitive verbs. Means verbs, main verbs and auxiliaries. And again, main verbs is divided into transitive verbs and intransitive verbs. So in this video, we will just learn this only. In the next video, we will just learn more about finite verbs, non-finite verbs, and strong verbs and weak verbs. And auxiliaries, you just see, again, they are divided into two parts, primary auxiliaries and modal auxiliaries. Primary auxiliaries, B में क्या क्या फॉर्म्स आते हैं? is, are, was, were, am. Do में क्या क्या? Do, does, did. Have में क्या क्या है? Has, have, had. And modal auxiliaries क्या क्या होते हैं? Will, would, shall, should, can, could, may, might, ought. Now, we will in detail, we'll just learn about transitive and intransitive verbs. A verb can be studied in terms of its object, whether it has an object or it does not have any. I have said you before also. So on this basis, verbs can be categorized as transitive and intransitive. Now, first of all, let us recollect something. Snehila baked a cake. Now, identify the object. You may use the following clue. Find the subject. Subject find करने के लिए sentence में subject find करने के लिए आप ये question कर सकते हैं. What is it about? या फिर who is it about? So who यहाँ पे कौन है? Snehila. So here Snehila is the subject. Now in this sentence again identify the verb. Verb क्या है? Baked. Identify the direct object. Object यहाँ पे क्या है? इसका question हम लोग कर सकते हैं. Who is receiving the action? Cake, a cake. या फिर what is receiving the question? A cake. So a cake क्या हो जाएगा यहाँ पे? Object. So
Check if the identified word is a noun or a pronoun. Here just see. Mithra is eating a chocolate. Mithra noun है. Zena plays the guitar. Zena is noun. The baby laughed. Baby, the baby भी क्या है? Noun. So, can you identify the subject and the verb in each sentence? Yes, we can. हम लोग पढ़े हैं. Subject or verb. तो subject is Mithra in this sentence. Verb is eating. Zena is subject. Plays is verb. The baby is the subject and laughed is the verb. Now, can you identify the object in each sentence? Yes. इस sentence में object क्या है? A chocolate. इसमें क्या है? The guitar. लेकिन इसमें देखिए थर्ड सेंटेंस में there is no object. There is no object in the sentence 3. This one, third. If the action of the verb passes on from the doer of the action to the object, then the verb is said to be transitive. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे action of the verb जो है, जो eating का जो verb जो है वो pass कहाँ गया है? doer से कहाँ चला गया? object में. और chocolate इसमें कहाँ चला गया? the guitar. इसलिए ये क्या है? transitive. और if the action of the verb ends itself, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं था और सेंटेंस कंप्लीट है. द बेबी लाफ्ड. कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. सो देन द वर्ब इज कॉल्ड टू बी इंट्रांसिटिव. नाउ so we know that the object is the person, animals or things which receive the action. The subject usually comes before the verb in the sentence. The object is usually comes after the verb. Just it will be clear from this example. The monkey ate a banana. So here the subject क्या है? The monkey. And object क्या है? Banana. So it is very clear कि the subject usually comes before the verb. Verb क्या है? Ate है. And object कौन सा है? Banana. The object usually comes after the verb. Now, can you find the object in this sentence? Just see. Mrs. Dawkins loves her garden. Her garden. क्या है इसमें? Object. Her garden. My mother bakes delicious cakes. इस sentence में object क्या है? Delicious cake. The crowd clapped their hands. इसमें object क्या है? Their hands. They ate sandwiches. इसमें ऑब्जेक्ट है sandwiches. I hear the bell. इसमें क्या है? The bell. उसी तरह से सब्जेक्ट और वर्ब भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं. सब्जेक्ट मिसेस डॉर्विन, लव जो है वो वर्ब, माई मदर सब्जेक्ट, बेक्स जो है वो वर्ब, द क्राउड सब्जेक्ट, क्लैप जो है वो वर्ब, दे सब्जेक्ट, एट वर्ब, आई इज सब्जेक्ट एंड हियर इज वर्ब. अगेन इन दिस सेंटेंस, माई सिस्टर प्लेज चेस. चेस क्या है? सब्जेक्ट. माई सिस्टर है, सॉरी, चेस है ऑब्जेक्ट, माई सिस्टर इज सब्जेक्ट एंड प्लेज इज verb and chess is what? Object. Now we will just learn here what is transitive verbs. Now you just see, what does the boy in the picture do? क्या कर रहा है? The boy kicks the ball. So who or what is the subject of the sentence? Sentence में subject क्या है? The boy. What is the action performed? Action क्या कर रहा है? वो लड़का क्या कर रहा है? Kicks. तो ये क्या हो जाएगा? Verb. What does he kicks? और receiver कौन है? Ball. तो the ball क्या हो जाएगा? If the action of the verb passes on from the doer of the action to the noun or pronoun, कहाँ पास हुआ है? The ball. Then the verb is called, the verb is said to be transitive. You just see the boy kicks the ball. यहाँ पे object है. So ये kicks जो है वो क्या हो जाएगा? Transitive verbs. Now one by one we are going to just learn about intransitive verbs. What is intransitive verbs? If the action of the verbs ends in itself and does not send its action to a word, then the verb is said to be intransitive. For example, you just see, the boy reads. Reads जो है, the same reads जो है वो क्या हो गया? वर्ब. और कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है और सेंटेंस जो एकदम कंप्लीट है, तो ये क्या हो जाएगा? intransitive. Now the same verb can be transitive in this sentence. You just see, he reads a book.
यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। तो अब देखिए यहाँ पे रीड्स जो है, इस सेंटेंस में रीड्स जो है वो क्या हो गया है, इंट्रांसिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और यहाँ पे वही रीड्स इस सेंटेंस में ट्रांसिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, अ बुक। नाउ फ्यू थिंग्स फॉर प्रैक्टिस। द बॉय सिंग्स वेल। सिंग्स वेल, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सिंग्स क्या है, इंट्रांसिटिव। नाउ द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। चिल्ड्रन जो है यहाँ पे क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। नाउ प्ले, प्ले क्या है, ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव है, नेचुरली ट्रांसिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव। तो आई थिंक इट इज क्लियर। द बॉय सिंग्स वेल, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया ये सिंग, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसलिए प्ले क्या हो गया, ट्रांसिटिव वर्ब्स। नाउ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स फॉर प्रैक्टिस। द बॉय सिंग्स वेल। सिंग्स वेल, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हो गया ट्रांसिटिव। एंड हियर अगेन द सेम थिंग, प्ले इज ट्रांसिटिव। नाउ प्रैक्टिस, कुछ एक्सरसाइजेज हैं दैट यू प्रैक्टिस। You pause your video and just try to solve, and after that you try to check your answer. If your answer is correct, means transitive and intransitive verb is clear. So identify the verbs and say if they are transitive, you write T, and intransitive for you write IT. The teacher distributed the notes. Distributed इसमें क्या है, I slept soundly, they enjoyed music, the mechanic repaired the car. Pause your video and just try to find out ये सब जो वर्ब है क्या है, ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव है, ये क्या है, ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव। नाउ चेक योर आंसर। हियर इट इज टेस्ट। now you check your answers. Now distributed, here it will be distributed क्या है, ट्रांसिटिव। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द नोटबुक्स। आई स्लेप्ट साउंडली, यहाँ पे स्लेप्ट क्या है, इंट्रांसिटिव। क्यों? बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्ट। दे इंजॉयड म्यूजिक, यहाँ पे अगेन ये क्या हो जाएगा, थर्ड वाला ट्रांसिटिव। देन द मैकेनिक रिपेयर द कार, अगेन यहाँ पे फोर्थ भी क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव। स्पीक सॉफ्टली, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, इंट्रांसिटिव। द फूड टेस्ट गुड, यहाँ पे टेस्ट गुड, अगेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, intransitive. So I think transitive and intransitive verb is clear to you. In the next video we will just do finite verbs and infinite verbs and strong and weak verbs. Till then, stay home, stay healthy. Goodbye.